Assalamu alaikum, dear friends. I welcome you to part second of the poem An Evening Wet with Rain. In the first part, we talked about imagery, symbolism and the first two stanza. Let me remind you, the poet remembers an evening wet with rain. The poet is walking through a lane accompanied by his companion. His heart wants him to hold his companion with love. The poet wonders whether he should stand on the ground or whether he should glide gently with the wind. The poet further says that the windows, doors, awnings of the house are all wet due to rain. The poet looks at a banyan tree and finds that cool breezes are shaking the leaves of the banyan tree. The collar of the coat is also wet, and there is complete silence all around. In the next stanza of the poem, the poet says, "My feet are cold with water seeping through my shoes. My eyes are heavy with sleep, or is it fever? The ground is very slippery and there is no place to stand. The mind is exhausted, looks for some place to rest." In the first line, "My feet are cold with water seeping through my shoes." The word seeping means to go through, or the word seeping means to percolate. उर्दू में किसी चीज़ में से पानी के रिसने को सीपिंग कहते हैं। तो इस तरह पोइट बोलते हैं, "My feet are cold with water seeping through my shoes." मेरे पैर ठंडे हो चुके हैं उस पानी से जो मेरे जूतों में से रिस रहा है। My eyes are heavy with sleep. मेरी आंखों पे नींद का खुमार है। और is it fever? या फिर ये बुखार तो नहीं? यहां पे शायद अपनी आंखों में बारीपन महसूस करते हैं और वो ये सोचते हैं कि उसकी आंखों का ये खुमार या तो नींद की वजह से है या फिर बुखार की वजह से। The ground is very slippery and there is no place to stand. आगे शायद बोलते हैं, जमीन बहुत ज्यादा फिसलन भरी है और इसलिए there is no place to stand, कहीं पे खड़े रहने के लिए कोई जगह नहीं है। The mind is exhausted. The word exhausted means tired, यानी थका हुआ होना। The mind is exhausted. मेरा मन थक चुका है। Looks for some place to rest. मेरा मन चाहता है कि मैं कहीं पे जाके आराम कर लूं। Thus, in this stanza, the poet says that his feet are cold with the water seeping through his shoes. The poet feels heaviness in his eyes. He wonders whether it is due to sleep or whether it is due to fever. The poet further says that the ground is very slippery and he does not find any place where he can stand. Next, the poet says that he is tired, his mind is tired, and he looks for some place where he can sit and rest. Moving on to the next stanza of the poem, the poet says, "Loss of hope has darkened the evening of my life too, and clouds gathering in the mind shed tears as they pass. The evening of troubles, my companion is also depressed and takes me along, holding me by the arm." In the first line, "Loss of hope has darkened the evening of my life too." The expression "the evening of my life" is metaphorical as well as symbolic. The way evening is the last part of the day, the evening of life means the last stage of one's life, that's the old age. तो इस तरह द इवनिंग ऑफ माई लाइफ का मतलब जिंदगी का आखिरी मरहला या बुढ़ापा।
तो शायर बोलते हैं, लॉस ऑफ होप हैज darkened द इवनिंग ऑफ माई लाइफ टू। नाउमेदी ने मेरी जिंदगी की शाम में भी अंधेरा कर दिया है। द poet has reached the lost stage of his life. He is hopeless. शायर अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले पर पहुंच चुके हैं, वो नाउम्मीद है। एंड होपलेसनेस हैज darkened his old age, और नाउम्मीदी ने उसके बुढ़ापे का अंधेरा कर दिया है। Here let me tell you, hope is the driving force in one's life. और इसीलिए कहते हैं नाउम्मीदी कुफ्र है। शायर तो नाउम्मीद हो चुके हैं, लेकिन हमें अपनी जिंदगी से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। आगे शायर बोलते हैं, एंड क्लाउड्स गैदरिंग इन द माइंड शेड टीयर्स एज दे पास। वंस अगेन द एक्सप्रेशन क्लाउड्स गैदरिंग इन द माइंड शेड टीयर्स एज दे पास is metaphorical as well as symbolic. What are these clouds? What are the clouds that gather in mind? These are the clouds of depression. These are the clouds of failure. तो ये नाउम्मीदी के बादल हैं, ये नाकामयाबी के बादल हैं जो हमारे मन में आ जाते हैं। और शायर बोलते हैं, and clouds gathering in the mind shed tears as they pass. जिस तरह बादल बारिश बरसाते हैं, उसी तरह ये नाउम्मीदी के बादल, ये नाकामयाबी के बादल जब मेरे मन में आ जाते हैं तो मेरी आंखें आंसू बहाने लगती हैं। द इवनिंग ऑफ ट्रबल्स, ये मुसीबतों की शाम। माई कंपेनियन इज ऑल्सो डिप्रेस्ड, मेरा साथी भी उदास ही है। तो यहाँ पे शायर अपनी जिंदगी की शाम को मुसीबतों की शाम के साथ मुकाबला करते हुए कहते हैं कि इस मुसीबत की शाम में उनके साथ साथ उसका साथी भी उदास है। आगे बोलते हैं, एंड टेक्स मी अलॉन्ग होल्डिंग मी बाय द हैंड। अगरचे शायर का साथी भी उदास है, लेकिन फिर भी वो शायर का हाथ थाम के उसको अपने साथ साथ लिए जा रहा है। Hence, in this stanza, we learn that the poet has reached the lost stage of his life. He is hopeless, and hopelessness has darkened his old age. Clouds of depression, clouds of failure gather in his mind, and his eyes shed tears. He compares the evening of his life with the evening of troubles, and says that his companion is also depressed. Although his companion is also depressed, still he takes him along, holding him by the arm. Thank you.